सो हाय गाइज, आई जस्ट केम फ्रॉम ए मशीन लर्निंग क्लास। तो आज मुझे अपने ग्रेड्स पता चले फॉर टेस्ट 2 एंड मैं उसमें भी फेल हो गया। इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट। आई वॉज लाइक थिंकिंग कि मैं इस टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया होगा बिकॉज इन माई प्रीवियस टेस्ट आई गॉट 46 out of 100 and in this test I got 69 out of 100. So I first of all want to share कि fail होने का मतलब क्या होता है in US. Like if I fail in this class then that means I will not be eligible for assistantships next semester. मतलब मेरी फीस चेंज हो जाएगी from $1,000 per semester to around $17,000 per semester without any salary. So जितनी भी salary मिल रही है through research assistantships, I will lose that salary too because I will lose my job. So no assistantships, no jobs, no salary, no scholarship, and also holds on my account which will prevent me to register for my classes next semester on time. And ये होगा if I get a GPA below 3.0 in my next semester. So आपको लगता होगा I still have a 4.0 GPA because when I was an undergrad student it was such a great feeling. मेरे हर exam में, almost most of the exams, I used to get hundreds, and also in some of the classes I also topped in the entire class. So that was a great feeling. But अभी this was very shocking for me. But also at the same time जब आप undergrad से master switch करते हो, you lose your GPA. Your GPA becomes 0.0 because you are starting a new beginning, new start. So it's like a fresh start for me. So that's why my GPA is 0.0 in my first semester as a master's student studying computer science in US. तो इसके कारण मेरी अभी GPA 0.0 है and I'm taking 3 classes. And अगर मेरे एक क्लास में let's say I fail, so that means 2.0 GPA आ जाती है अगर मेरा C ग्रेड आता है। एंड हियर एज अ मास्टर स्टूडेंट अगर आपका 80 से कम आता है दैट मीन्स यू हैव टू टेक द क्लास अगैन। तो अगर C आता है या फेल आता है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के मैं सिर्फ 2 कोर्सेज ले रहा हूँ, सो माई कंप्यूटर साइंस GPA विल बी अराउंड 3.5 इफ आई गेट 4.0 in my IoT class and 2.0 in my machine learning class. But if I get 3.0 in my IoT class and 2.0 in my machine learning class, that means my GPA will be 2.5 in computer science, जिसका मतलब it will be less than 3.0. So that means I will lose all the opportunities that I have been given in this semester. तो next semester $17,000 fees, और मैं graduate होने वाला हूँ. So I'm planning to graduate in May 2020 so that I can start my full-time job later on. So that will not be possible either. So it is a very risky thing. So जब मैं fail होके निकला I was very very depressed. मैं सारी चीज़ें सोच रहा था तो क्या होगा फ्यूचर में, मतलब अगर ये सारी चीज़ें हुई तो इट विल बी लाइक अ स्पॉइल्ड फ्यूचर एंड सब कुछ जो भी प्लान किया था सब कुछ अधूरा छोड़ना पड़ेगा. सो आई वॉज फीलिंग दैट. तो काफ़ी बार मुझे मतलब वो नेगेटिव थॉट्स आने लगे, यार मैं क्या करूँ. तो उसके बाद मैं सीधा जिम गया. आई फेल्ट लिटिल बिट रिलैक्स. फिर दोबारा वो थॉट्स आने लगे. सुबह आई वोक अप एट 6 AM without any reason because I was stressed, so I started studying again. So these thoughts happen. कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मतलब good or bad days आ जाते हैं. So life is full of ups and downs. और पास होने के लिए टू पास इन यूएस लाइक यू मिनिमम नीड 70 मार्क्स बिकॉज अगर आपके सी नहीं आते अंडरग्रेड में देन यू आर फेल. बट इन मास्टर्स अगर आपका बी ग्रेड नहीं आता दैट मीन्स 3.0 आउट ऑफ 4 देन यू आर फेल. सो इट इज़ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. और आपको लगता होगा कि मैं अंडरग्रेड में मैनेज कर पा रहा था, देन व्हाई आई एम नॉट एबल टू मैनेज इन माई मास्टर्स. सो द रीजन इज दैट देयर आर कपल ऑफ रीजन. सो सबसे पहले आपको लगता होगा दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब दैट आई एम डूइंग मल्टीपल जॉब्स, रिसर्च असिस्टेंट, एंड आई हैव स्टिल माई undergrad project that I'm working on, so 2 to 3 jobs and this channel. So you might be thinking ki YouTube led to a failure, but that's not true. It's not that I don't know how to study. So I knew how to manage my time, so I studied in the same way. So जैसे undergrad में पढ़ता था, I used to keep reading my slides so that I'm on track with the class and then practice problems. But this time I was little bit careless क्योंकि मैं slides के साथ cope up नहीं करता था because I knew some of the concepts that were taught in this class from my undergrad. So I thought machine learning is easy because linear regression, I mean I will not bore you with the concepts, but मुझे लगता था मुझे सारे concepts आते हैं. But after like 1 or 2 classes I was like कि आते तो हैं एंड इट सीम्स इजी, तो पेपर भी वैसे ही आएगा जैसे अंडरग्रेड में आया था. बट आई वॉज ब्लोन अवे व्हेन आई सॉ द एग्जाम. आई वॉज सो स्केर्ड, व्हाट इज दिस लाइक. और जब मैंने आंसर शीट देखी आई वॉज शॉक. ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करना था और आंसर आ जाना था. दिस वॉज जस्ट 1 line आंसर. इट वॉज सो ईजी. सो आई फेल्ट बैड अबाउट इट, बट इट वॉजंट दैट ईजी बिकॉज द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे एंड आई वॉज स्केर्ड जस्ट लाइक इन JEE Advanced. तो JEE Mains आप समझ सकते हो कि अंडरग्रेड इज लाइक JEE Mains. जब क्वेश्चंस आर टू द पॉइंट, use the formula, get the answer. If you know the concepts, you will be able to pass. But JEE Advanced, because there are like a couple of reasons. First reason that
कि हमें यहाँ पे 2 बुक्स प्रोवाइड की। सो उन्होंने 2 बुक्स दी कि आपको पेपर कहीं से भी आ सकता है। आई वाज लाइक कहाँ से आए, कौन सी बुक से शुरू करूँ? पहले तो एक ही बुक होती थी हर क्लास की, नाउ देयर आर 2 बुक्स। सो आई वाज लिटिल बिट स्केयर्ड वेयर टू स्टार्ट, सो आई डिडंट रीड द बुक एट ऑल बिकॉज आई थॉट स्लाइड्स आर इनफ, बिकॉज अंडरग्रेड में भी स्लाइड्स यूज्ड टू बी इनफ बिकॉज देयर वर नो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स असाइंड टू अस। एंड अंडरग्रेड में मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस था, दैट इज ट्रू, बिकॉज आई यूज्ड टू आस्क प्रोफेसर कैन यू हेल्प अस गेट सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। तो इस बार मैं थोड़ा केयरलेस था बिकॉज आई न्यू सम ऑफ द कॉन्सेप्ट सिंस माई अंडरग्रेड, बट पेपर के बाद होश खो गए, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। तो ये थोड़ा सा रीज़न था। एंड नेक्स्ट रीज़न आई वुड से वुड बी दैट it is a little bit more challenging. So with masters, like they want you to research a little bit more. तो हमें ना slides में research papers provide करते हैं so that we can go deep into the concepts and learn more than we want to. But I didn't go deep because I thought मुझे आता करते करते I was lacking behind. But I was attending every single class. I was like participating in my class activities, और जब भी मतलब कोई doubt होता था class में मैं पूछता था. But exams में थोड़ा सा level hard हो जाता है because I didn't practice enough. So after failing once, I tried to fix my mistake. I asked the TA and the professor कि आप questions कहाँ से डाल रहे हो? Which books should I study? Like the first one or the second one, so that I can prepare in a better way for the next quiz. So he said like हम खुद ही questions बनाते हैं, just like in JEE-Advanced कि वो खुद बनाते हैं. They are super smart and mathematicians. Similarly here also there is no specific book. I just like tried to get more practice problems from the MIT's website. I did a lot of things, but questions were still challenging. और मैं डर गया था second quiz में कि मतलब मैं क्वेश्चन देख के डर गया था और एक फेल होने का थोड़ा सा डर था, उसके कारण भी नंबर कम आ गया. आई न्यू मोस्ट ऑफ द क्विज टू, आई न्यू द कॉन्सेप्ट्स की मैंने प्रैक्टिस की थी, बट वो डर कारण और कम आ गए. एंड देयर इज वन मोर रीजन आई वुड लाइक टू शेयर दैट माय रियल पैशन इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग. दैट्स व्हाई आई टुक IoT क्लास बिकॉज वहाँ पे भी हम सेंसर्स यूज करके एंड्रॉइड ऐप बनाने वाले हैं. बट I took machine learning because my friends were taking. So I thought when I will be taking classes with my friends, it will be easier because we can discuss problems. It gets more fun too. But I was wrong because जब हम अपनी choice की classes नहीं लेते, we are not more passionate about it. So for example, मैं IoT class के लिए बहुत serious हूँ. I am like enjoying it more than machine learning class क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा काम नहीं करने वाला machine learning में और मेरा इतना interest भी नहीं है. So that also makes an impact on your performance. So अगर interest नहीं है तो आप इतना hard work उस class के लिए डालना भी नहीं चाहोगे. सो दैट्स ऑल्सो रीजन. एंड ऑल्सो लाइक व्हेन आई आस्क्ड माय प्रोफेसर कि कितने क्विजेस आने वाले हैं, सो इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग टू. मतलब आपको लगता होगा क्लास बहुत बोरिंग है एंड डिफिकल्ट है. नो, इट्स नॉट. प्रोफेसर इज रियली नाइस. आई आस्क्ड हिम हाउ मेनी क्विजेस विल बी देयर. ही रिप्लाइड यू कैन अज्यूम इट एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 स्टैंडर्ड डेविएशन टू, एंड ही एक्सप्लेन लाइक ही एडेड बंच ऑफ मोर नंबर्स इनटू इट. तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया. तो इट इज अ वेरी एंटरटेनिंग क्लास. बट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है और मैंने इतना हार्डवर्क नहीं किया और एग्जाम बहुत हार्ड आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई फेल्ड ट्वाइस. और अगर आपको लगता होगा कि मार्क्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इतने भी बुरे नहीं है बिकॉज क्लास एवरेज वॉज ऑल्सो लो, बट एट द सेम टाइम माई परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज. सो दैट्स इवन बैड देन व्हाट आई थॉट. सो एवरेज वॉज लाइक 50s फॉर द फर्स्ट quiz or first exam and I got 46, and average was like 77 for the second one and I got 69. So it is not that good, but प्रोफेसर ऑलवेज गिव्स यू अ सेकंड चांस. अगर आपके 5-6 क्विजेज में एक क्विज में अच्छे नंबर नहीं आए, देन ही माइट ड्रॉप दैट क्विज और ही माइट गिव यू अ बेटर कर्व डिपेंडिंग ऑन द क्लास परफॉर्मेंस एज अ होल. सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स. तो मेरे तो होश खो गए. आई एम लिटरली शॉक्ड. एंड ऑल्सो इन माई फर्स्ट होमवर्क आई डिडंट गेट 100, आई गॉट 80 पॉइंट्स. सो इट इज लिटिल बिट मोर अनोइंग. तो काफ़ी डर लग रहा है, बट आई एम स्टिल इनटू इट. मैं पूरा अपनी जान लगा दूंगा, वीडियोस कम बनाऊंगा और I'll prefer to study more machine learning than Spanish or any other subject because अभी machine learning में पास होना ज़्यादा ज़रूरी है as compared to like getting a good grade in other subjects because Spanish is not part of my computer science GPA, so that's why I have to pay more attention towards my computer science courses. So मुझे लगता है कि अगर मुझे क्लास में पास होना है, I need like 90+ in most of my exams, quizzes and homework ताकि मैं on track हूँ. Not only 90+, 95+. It's going to be a little bit more challenging. अगर curve नहीं होता तो 95+, अगर curve हो जाता है so it will be a little bit easier. It is still hard और मुझे project में भी बहुत मेहनत करनी है. And Carl also told me that this is the most difficult class of his life, of his career. Still I took the risk and also I took Spanish 2 directly without taking level 1. मैंने काफ़ी रिस्क लिए इस सेमेस्टर, so it was hard. और मुझे फिर से याद आ रहा है that मैंने कंप्यूटर साइंस ली और कंप्यूटर साइंस ने मेरी ली, बट इवन मोर देन दैट मैंने मशीन लर्निंग ली एंड मशीन लर्निंग मेरी ली. और मुझे अपने फ्रेंड्स की बात माननी चाहिए थी जिन्होंने कहा कि दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास ऑफ माई लाइफ. सो दैट्स वाई माई गोल इज़ कि आगे से मैं वही क्लासेस लूँगा
जो मुझे पसंद है. So this class basically reminds me more about JEE Advanced. जैसे कि जब हमारे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते थे ना, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आ जाते थे और आपको प्रॉब्लम्स आती थी तो होश खो जाते थे, डर भी लगता था. So similarly questions are framed in that way. They are more scary. So उसके कारण भी थोड़ा फर्क पड़ा. एंड ऑल्सो लाइक यू हैव टू गो डीप इन टू द कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक JEE Advanced, बट आई एम विलिंग टू पुट दैट मच हार्ड वर्क अगैन. जितना मैं 11th और 12th में डालता था अब वापस उसी फॉर्म में आ गया हूँ. अंडरग्रेड में इतना नहीं करना पड़ा. अंडरग्रेड में मतलब स्लाइड्स पढ़ी, प्रैक्टिस की, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स की और हो गया. बट नाउ इट्स मोर अबाउट गोइंग डीप इन टू द कॉन्सेप्ट एंड गिविंग योर 100% अगैन. So I am taking this challenge. So I'll get back to you जब मुझे लगेगा कि मैं पास हो रहा हूँ, और जब भी रिजल्ट आएगा होपफुली आपका अगर दुआएं रहीं तो पास हो जाऊँगा. So I'm gonna give my 100%. मोस्ट लाइकली पास हो जाऊँगा, बट एक डर ज़रूर होता है. So I'm gonna try more to lose that fear and then get back to you at the result. So that's pretty much it. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye.